तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली दिस इज मोशन इन अ प्लेन, राइट? मोशन इन अ प्लेन। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इसके अंदर जो तीन मेजर पार्ट्स हैं, सबसे पहला पार्ट जो है वो है वेक्टर्स, ठीक। तो दूसरा पार्ट इसका है रिलेटिव मोशन, जिसमें आपने देखी होगी रिवर मैन प्रॉब्लम, अगर स्कूलों में कभी कहीं पे देखा हो रिवर मैन, रेन मैन प्रॉब्लम, ये सारी इस पार्ट में आती है, रिलेटिव मोशन। एंड द थर्ड पार्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ज्यादातर बच्चों को पहली बार में बहुत मुश्किल लगता है, राइट? इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट इजी। एंड फोर्थ पार्ट विल बी circular motion, right? So clearly you can see in the name of the chapter, this is all about the motion in a plane, a motion which happens in a plane, right? Circular motion is in a plane, projectile motion is in a plane. What does this what is the meaning of a motion in a plane? एक ऐसा मोशन, एक ऐसा पाथ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए लाइन नहीं, किसकी जरूरत पड़ती है? प्लेन की। उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन, राइट? 2D, यस, 2 डायमेंशन, एक्स एंड वाई एक्सिस। डायमेंशन का मतलब एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक डायमेंशन हमने और पहले भी पढ़ा था, वो यूनिट सेट डायमेंशन वाला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इन हियर डायमेंशन मींस द डायरेक्शन। सो देयर आर 3 फंडामेंटल डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड। So if the motion is along one of the axes, then it is a motion in a one dimension. If it requires 2 dimensions or 2 axes to completely represent, then it is a motion in 2 dimension and so on. So there are 3 dimensions. हमारे सिलेबस में कहां तक हमें करना है? 2 dimension के लिए। वैसे इन जनरल भी हम लोग करेंगे बाद में एग्जांपल के थ्रू। चलिए, बट 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में कैसे जाएंगे, उसके लिए जो मैथमेटिकल लिंक है, उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सपर्टाइज आपको चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर्स। व्हाट इज अ वेक्टर, व्हाट इज अ स्केलर, इसके बारे में आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन फील के साथ होना जरूरी है। आफ्टर दैट तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं, इसके प्रूफ एंड सो एंड सो, राइट? तो सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन कि वेक्टर क्या है और क्यों है। वेक्टर्स स्टेटमेंट लिख लेते हैं। The physical quantities that need direction, magnitude to completely describe them is and also follow the law of vector addition is are called as vector quantities. तो बेसिकली वेक्टर एक डिस्टिंक्शन है, एक क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटीज का। 2 पार्ट्स में फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज स्केलर्स, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। बट देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसे भी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं हम लोग? स्केलर या वेक्टर, वो दोनों हो सकती हैं। तीसरी कंडीशन एक और है कि जब इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, देन दे मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर बनने के कितने क्राइटेरिया हैं? क्या होना चाहिए? दूसरा, एंड मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये 3 कंडीशन रिक्वायर्ड है टू बी अ वेक्टर, राइट? लेट मी एक्सप्लेन ये क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई ऐड 2 kg प्लस 5 kg, कितना आंसर आएगा? 7 kg. इफ आई ऐड 2 kg लाइक दिस प्लस 5 kg, कितना आंसर आएगा? इफ आई ऐड 2 kg प्लस 5 kg, कितना आंसर आएगा? इट मेक सेंस क्या? ये इनको मैं कहां लिखूं, इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये किस डायरेक्शन में है? क्या इनके ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं. लेकिन ये बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगा और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा. बताओ नेट फोर्स क्या होगा? ये एरो क्या बनाया मैंने? फोर्सेस बनाए. इधर से 2 न्यूटन लगा, इधर से 3 न्यूटन. क्या यहाँ पे भी 7 न्यूटन है आंसर या नहीं? व्हाई नॉट? तो क्या ये फोर्स और मास एक जैसे या बिल्कुल अलग तरीका इनको ऐड करने का? वाई अलग? क्योंकि फोर्स को ऐड करते टाइम वी हैव टू कंसीडर दी. अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या आप 7 न्यूटन होगा? तो यानी 2 और 5, यानी 2 प्लस 5 यहां भी कर रहा हूं, लेकिन 2 प्लस 5 कभी 7 होता है और कभी 2 प्लस 5 3 भी हो जाता है. वाई? डायरेक्शन. सो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? जिनको ऐड करने में डायरेक्शन का रोल होता है. और उसी रोल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ. उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? तो जिन क्वांटिटीज को ऐड करने में, द क्वांटिटीज विच रिक्वायर देयर डायरेक्शन, वी नीड द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर डायरेक्शन ऑल्सो, नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड टू ऐड देम. इवन दो यहां पे भी बोल रहा हूं कि फोर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया? घट गया. यहां पे भी फोर्स को ऐड कर रहा हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ऐड हो गया. एक और तरीका है फोर्स को ऐड करने का. यहां पे 2 न्यूटन आया और यहां पे 5 न्यूटन आया. इसका आंसर ना तो 2 है, ना तो 7 है, ना 3 है, इसका कुछ और ही है. इट मेक्स सेंस एवरीवन? सो कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर? डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड इट शुड फॉलो अ लॉ ऑफ वेक्टरेशन. वेट, ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट एग्जांपल लिखिए. आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटीज. मैं बहुत सारे लिखने वाला हूं, आप अपनी बुद्धि से बताएंगे. बताइए. Yes, basically I have told them the distinction between vector and a scalar. It's a very fundamental one, right?
Anything which have, anything means any physical quantity which can be measured, right? So it can be either a vector or a scalar. So there are three criteria to become a vector. It should have a direction, magnitude, and it should follow a different law for addition. It should not be added like scalars. It means when you want to add two quantities, we need the information about its direction. Then it will qualify as a vector. So now using this criteria, you have to identify which of them are scalar and which of them are vectors. What can you think about mass? Is it a scalar or vector? It's 100% scalar, right? So it is not a vector. What about density? It's also scalar. It doesn't. There is no meaning of direction for the density, right? Distance. Distance. Suppose if I go here by 100 meters, right? And then I come back again. What is total distance? Is it 0 or 200? So do you think distance follow the vector addition? Or it keeps on adding like a scalar? So distance is a scalar. It is not a. What about displacement, my dear? Displacement is a 0 here. Why? Because displacement has a information about direction. Because if I go like this 100 meter ahead, then displacement will be 200. If I go up like this, then displacement will be 100 root 2. So when you are adding two arrows, you need the direction to calculate what? Displacement. So it is a perfectly vector quantity. Rather, try to visualize vector in terms of. अभी जब तक हम पहली बार वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर का मतलब क्या आपने लिए? तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट. Can you visualize as a displacement, vector as a displacement? Suppose if I add this vector plus this vector, what will be the resultant vector? Displacement, my dear. If I add this vector plus this vector plus this vector plus this vector, what will be the resultant vector? Can you see? It is easier to visualize in terms of displacement. समझ में आ रही बात? तो वेक्टर को थोड़ी देर के लिए किसमें सोचोगे? डिस्प्लेसमेंट, हेड और टेल. अभी आगे में ये पॉलीगॉन लॉ है, ये ट्रायंगल लॉ है, ये सभी इन सब आने वाले हैं आगे. फोर्स, ये तो मैंने एग्जांपल ली. एनर्जी, एनर्जी 2 जूल प्लस 3 जूल. You need the direction for energy. Energy, it's a scalar, perfectly scalar quantity. Pressure, force by area. The force is there. this is not vector. Just remember for the time being, these are some examples which you will learn in later in the physics. Pressure is not vector. Pressure has no direction. Pressure is the density. It's the force per unit area. It is like density. It's a force density, right? It's not vector. Remember, you will remember pressure is a. These are some exceptions जो मैंने intentionally लिखे हैं, आपने याद भी रखने, एग्जाम में आएंगे. तो यहाँ पे उल्टी बुद्धि चलती है इसलिए लिखे मैंने. You will remember, right? Area, it is a vector. The orientation of area represents the direction of area. Orientation of area. You can see this area. You can see this area. You can see this area. So each area is a square, but every area has different orientation. This is horizontal, this is vertical, but along east-west. But in general, when we talk about vectors, we talk in general. Area is for you. Yeah. हम आगे फिजिक्स में देखेंगे कि we do a lot of dot products with areas to calculate magnetic flux, electric flux, and so on. So area is a vector. The magnitude is the area, but the direction is orientation, right? Electric current, it's a scalar. Yes, but it does not follow the vector law, right? If you can visualize, if I add 1 ampere from here and if I add 2 ampere from here, do you think the remaining current will be only 1 ampere or 3 ampere? So it has a direction, but still it is not a vector. Very special cases, remember. So these are for some special cases जो बच्चों के गलत कर होते हैं जनरली, तो आपने ये याद रखने हैं, right? Clear? It's difficult. So what are the criteria to become a vector?
direction, magnitude, and should follow a, should behave like a vector. Should behave like a vector, right? Yes, yes, sure. So now we know why, what is a vector, how it separates from a scalar. Second thing, we know the criteria to become vector. And third thing, we know how to visualize vector. How to visualize? Using displacement. Using. So whenever I will use any law, triangle law, parallelogram law, polygon law, you will visualize that law using displacement. That will help you to remember the law. Huh? In any क्यों प्लेन के पीछे पड़ा है भाई? In general है वेक्टर. Vector algebra is applicable to even n dimensions. हम तो दो की ही बात कर रहे हैं और हमें दिखते तीन है, लेकिन मैथमेटिकली we can have n dimensions as well, and vector is applicable there also. Vector is such a fantastic basic mathematical tool to handle these kind of quantities which have directions. Similarly, the calculus was a tool to calculate rate of change. Similarly, vector is a tool to calculate direction, to represent direction, right? So now let's write few types of vectors. Sorry, first we'll write representation. Representation of vector. So basically, as I have told you, the vector was defined, the vector was invented to represent a direction. And what is a direction? Direction is a line. Don't you think direction is a line? North means, is it a small north, big north, or the complete line is north? Complete line is east. So don't you think every line which I draw is a direction, right? Every line which I can draw, कोई भी अगर मैं line यहाँ पे draw करता हूँ, let me draw a line like this. Line means a finite point or infinite points on a same. So don't you think it represents a particular direction? Although there are two possibilities. One is up, positive, and one is down, negative, right? So to distinguish this, what we do, how do we define vectors? We take any 2 points on this. ये लाइन तो इनफाइनाइट है, लेकिन इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं, let me call one point is A and one point is, then don't you think this will become a part of this line? And this line segment will have some length. That length is called as magnitude of the vector. And suppose if you are indicating the above direction, then we use one of the end with arrow. So this line segment with some length and arrow is called as, is represented as a vector. So what is a vector? It is a directed line segment. What is a vector? It is a directed. Why directed? Because there are two possibilities. Otherwise, दो possibility है ना यहाँ पे, नहीं तो मैं सिर्फ line बना के छोड़ देता. ऊपर दिखाने के लिए एरो ऊपर है और नीचे दिखाने के लिए एरो नीचे. So what is a vector for you? It is a directed line segment, and the length of that segment is called as magnitude of vector, and the arrow of that line segment indicates the direction of vector. Represent क्या समझ क्लियर? चलिए, तो बेसिकली क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट, अब क्या पूरी लाइन बनाने की जरूरत है, और आई कैन जस्ट यूज दिस साइन एज अ वेक्टर. देयर विल बी इसको हम लोग हेड बोल देते हैं, इसको हम टेल बोल देते हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं वेक्टर. या इसको अगर कोई भी लाइन सेगमेंट अगर ऐसे बना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, दिस इज ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड एज ए टू बी वेक्टर, ए बी वेक्टर. विल रीड इट एज ए बी vector AB, right? तो यहां पे लिखिए, जैसे एक छोटी सी चीज और है,
जैसे और भी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी आपके सामने फोर्स आएगा, तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहला अल्फाबेट ले लेंगे और विल पुट अ एरो साइन। सपोज वेलोसिटी आया, वेलोसिटी का पहला अल्फाबेट लिया और विल पुट अ साइन। सपोज वी हैव लेट्स से एक और वेक्टर क्वांटिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पे s लिखते हैं ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, s के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। सो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट, और जो एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया, ए वेक्टर, एरिया इज ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है ये, याद है जब मैं आपसे बोलता था पार्टिकल इज थ्रोन अप, तो ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते थे कि नहीं, विद स्पीड। सो दिस इज अ यू वेक्टर। और जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था नीचे, उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, माइनस। सो वी ऑलरेडी हैव यूज्ड एरोज टू इंडिकेट द डायरेक्शन। ऊपर वाले को आप प्लस लिख देते थे और नीचे वाले में माइनस डाल देते थे, राइट। तो वो एरो आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन था ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जब 2D में मोशन होगा देन द डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट सर्कल। डू यू हैव अ सिंगल डायरेक्शन और डू यू हैव सो मेनी डायरेक्शंस? तो ये प्लस माइनस काम करेगा और वी नीड समथिंग मोर, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग वेक्टर्स, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं था बताने लायक, जस्ट मेरे को एक इन्फॉर्म करना था। अब यहां पे लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले लिखिए कोलिनियर वेक्टर्स। लिखिए the two vectors are said to be collinear. The two vectors are said to be collinear if they are parallel or anti-parallel to each other. If they are parallel or anti-parallel to each other. Yes. These all vectors are what? Collinear, not parallel. ये दोनों तीनों पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, but all of them are collinear. Do you think the collinearity depends on their length or it is independent of length? It does not depend on length. Length can be small or big, doesn't matter. Co-planar vectors. लिखिए the vectors which can completely lie in a plane, the vectors which can be completely lie in a plane are co-planar vectors. Completely means what? Let me explain. The vectors which completely lie in a plane are co-planar. Completely का मतलब समझ में आया? Let me explain. Is this a vector or not? Yes, it has an arrow. Let me. So this is a plane or not? क्या ये completely plane में lie कर रहा है? From head to tail पूरा का पूरा आ गया कि नहीं इसके ऊपर? Is it now completely lying on the plane? No. So completely lie on the plane means from head to tail, each and every part of vector should be in a given plane. So if two vectors are in the same plane, then they are coplanar. If three vectors are in the same plane, they are also coplanar. But if any of the vector is out of the plane, then this vector is not coplanar with these. So do you understand the coplanar vectors? So plane is made up of two axes, xy plane, yz plane. So if any vector lies in xy, then we'll call it as a coplanar vector, and we are dealing with only coplanar vector in 2D motion. In 2D motion, the velocity, the acceleration, the displacement, everything will be coplanar because the complete motion is within a same plane, right? लिख लिया definition? Third,
position vector. So do you understand the meaning of position? Motion in 1D, in motion in 1D, we have only one line, but in motion in 2D, we'll have at least two lines. It means two coordinates. It means each point will have two coordinates. One will represent the distance from x-axis and one will represent the distance from y-axis, that is x comma y. So this is a special point in this plane, right? So this position can be represented using a vector by drawing a line from origin and putting arrow over here. This is represented by this arrow is called as position vector. An arrow with a tail at origin and the head at the given position is called as position vector. And what it does, it indicates the position of a given point in a plane or 2D or 3D, right? लिख लीजिए इसको. The vector with tail at the origin and head at a given point in the space represents the position vector of head at a given point in the space. Space का मतलब 2D, 3D, whatever in general. Represents the position vector for that point. Represents the position vector for that point. Is it clear? Fourth point, equality of vectors or equal vectors. What do I mean by equal vectors? ये बताओ 2 equal to 2 होता है? Not in vector. This is 2 meter long and this is 2 meter long. क्या ये दोनों equal हैं? Why not? They have different direction. So when two vectors are equal, when they have same direction and right, two vectors are equal if first they must have same direction, second magnitude, same direction, second magnitude, third dimensions, unit. Can you equate force equal to velocity? Both are vectors, but can you equate? भाई फोर्स भी इधर लग रहा है 2 न्यूटन और वेलोसिटी भी इधर है 2 मीटर पर सेकंड. क्या दिक्कत है? Can you equate these two? No. Direction, magnitude and unit. ये भी ध्यान रखना, right? Fifth point, null vector. Null vector or zero vector. So what is a null or zero vector? Let me explain. There will be a situation. Suppose if I subtract two vectors which are equal, what will be the result? Zero, right? Zero. So this zero, what is the direction of this zero? Is it a vector or a scalar? But vector minus vector should be a vector, like force minus force should be a force. So there was a requirement of a special vector called as null vector, which does not have direction. So if somebody asks you, give an example of a vector which does not have a direction, then you have an answer as zero vector, null vector. So is there any other vector without direction? Yes, null vector. Yes, apart from No, it is a mathematical. We need to define. ना नहीं तो हम क्या लिखेंगे? If I subtract a minus a, what will I get? So there is a reason to define it, right? So what is a null vector? Null vector is a vector with no direction and zero magnitude. Null vector is a vector with
no direction, and what? Zero magnitude, right? Sixth, unit vector. Unit vector. So unit means here magnitude. Unit means here, unit means one, right? So the vector which has magnitude equal to is called as unit vector. So any vector, you right, there can be many vectors, they can have a magnitude equal to, they can have magnitude equal to. So all these vectors are called as, all these vectors come into the category of unit vectors, right? It makes sense. So do you think all the unit vectors are same? They are same. So just magnitude. They are different, right? They have only what common? They have only magnitude equal, which is 1. But what is the difference in them? They have different direction. So also dimensions. Yes, also dimensions. So do you think these are the best candidates to represent direction? देखो जरा भाई, दो ही तो चीजें थी वेक्टर में. डायमेंशन थोड़ी देर के लिए छोड़ो. Let me talk mathematically, like numbers. So any vector will have a magnitude and a direction. These two will vary. Suppose if I remove the magnitude, what remains? Direction. See, suppose if I make the magnitude of each vector equal to 1, then what information do they carry? Direction. If I remove the magnitude, or if I make magnitude of every vector 1, then what information do they carry? Direction. So unit vectors are also defined as directions. तो डायरेक्शन जो आप बोलते हो ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, इनको ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं अभी? यूनिट वेक्टर. यानी वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल द डायरेक्शंस इंक्लूड यूजिंग यूनिट वेक्टर्स. राइट definition. The vectors which have magnitude equal to 1, the vectors which have magnitude equal to 1 represent directions. Represent directions, and we have a special symbol, and we have a special symbol to represent them, and we have a special symbol to represent them. हमारे पास एक स्पेशल सिंबल है उनको रिप्रेजेंट करने का, एंड दैट सिंबल इज कॉल्ड एज कैप. इसको क्या बोलते हैं? कैप. क्लियर है? श्रेयस, आ रही आवाज? अभी साइन बनाते हैं. हेलो, तो कैप का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पे ये ऐसे, ये जैसे मैंने फोर्स वेक्टर लिखा था, जैसे मैंने ए वेक्टर लिखा था, जैसे मैंने वी लिखा था, जैसे मैंने पोजीशन लिखा था, जैसे मैंने एक्सेलरेशन लिखा था, अगर इन सब के ऊपर कैप लगी हुई है तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये? इसका मतलब क्या? इन टोपी लगाने के बाद इनका क्या हो गया? डायरेक्शन रह गया. मैग्नीट्यूड क्या कर दिया आपने? 1 कर दिया, राइट? So if I put a cap on any word, it means it represents a magnitude direction 1 और magnitude 1. डायरेक्शन तो भैया नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो सकती है. यूनिट वेक्टर्स. डायरेक्शन 1 कहाँ है? It doesn't make sense, right? Only magnitude can be 1, right? So basic unit vectors, write a note. We define basic unit vectors. We define basic unit vectors which represents the standard directions of the space, which represent the standard directions of the space. तो जैसे आपने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस क्यों कहा?
आर्बिट्रली चूज किया ना एक्स वाई जेड, एक एक्स हो गया और दूसरी वाली एक्सिस क्या हो जाती है वाई। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 1, इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया आई, और क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1 तो आई के ऊपर क्या लग गया कैप। तो जब भी मैं आई कैप लिखूंगा तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए, इट्स अ वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। व्हाट अबाउट इफ आई पुट अ माइनस साइन, व्हाट डज दिस मीन माइनस आई कैप? इट मींस opposite direction, a unit vector which is in opposite direction. What if I write force vector is equal to, this means there is a vector जिसकी लेंथ कितनी है 1 और 10 है, but it is pointing towards positive x-axis. Suppose if I write velocity vector is equal to 20 j cap, what does this mean? 20 A particle is projected upwards with the speed 20 meters per second. When I write acceleration vector is equal to minus g j cap, what does this mean? The magnitude is here and the direction is j cap. So जैसे x के लिए I लिखा वैसे ही y के लिए क्या हो जाता है j cap, और वैसे ही z axis के लिए क्या हो जाता है, there will be a z axis, right? This will be k cap. तो जैसे आपने x y z एक्सिस लिखा वैसे हमने आर्बिट्रली i j एंड और ये इनके ऊपर कैप लगा दी, तो ये सब x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, y के लॉन्ग यूनिट वेक्टर एंड z के लॉन्ग यूनिट वेक्टर. सो i j के क्या है यूनिट वेक्टर्स अलोंग x y एंड z. क्या दुनिया में ये तीन ही डायरेक्शन है और भी है? और भी है, लेकिन वो सब किनके टर्म्स में लिखी जाएंगी? क्या इंग्लिश में 26 वर्ड्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन वर्ड्स कितने हैं? बहुत सारे. तो वो बने किससे हैं? 26 अल्फाबेट्स से. फिजिक्स में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज थी? 7 फंडामेंटल, लेकिन बनी कितनी? इनफाइनाइट, बहुत सारी. सिमिलरली ये तीन फंडामेंटल डायरेक्शंस हैं और इनसे हम हर लाइन की डायरेक्शन लिख सकते हैं. हाउ विल लर्न नाउ, राइट? So generally there is also a convention north south east west. north ऊपर की तरफ, south नीचे की तरफ, east west. बताओ north को कैसे लिखोगे? How do you represent a north direction? Plus j cap, right? East plus I cap, south minus j cap, west minus I cap. Similarly there will be a direction up and down. Up means plus k cap and down means माइनस के कैप. सो दिस इज, ये है हमारी 8 डायरेक्शन, 8 फंडामेंटल डायरेक्शंस. नॉर्थ देखो, नॉर्थ वाई एक्सिस के पैरेलल बनाया कि नहीं? तो नॉर्थ को क्या बोल दिया मैंने? जे. जेड इज द 3 डायमेंशन. अप डाउन. नॉर्थ दिल्ली अप है या नॉर्थ दिल्ली इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन? तो नॉर्थ और अप एंड डाउन भी तो है. So North Delhi, South Delhi, East Delhi, West Delhi. This is in a horizontal plane, but up and down is z-axis, right? Make sense? Any doubt? So there are a few notes. This is note number 1. So what are the basic units? What is I, J and K? What is I, J and K? How do you define I, J and K? What is I? I is a unit vector along x-axis. What is J? J is a unit vector along y-axis, and so and so on. That is the definition, right? Second. Clear हुआ? Example. A person goes north 10 meters
A person goes north 10 meters and then east 10 meters. Represent its direction using I and J unit vectors and thus calculate the magnitude. And thus calculate the magnitude. मैग्नीट्यूड निकल गया. तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक पर्सन, एक मतलब ऑब्जेक्ट पहले ए से गया 10 मीटर नॉर्थ, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना? 10 मीटर नॉर्थ गया. सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट नॉर्थ? इट इज नो 10 जे एंड देन so how do you represent east? 10 I cap. So don't you think the total finally you will reach B? This is A and this is B. So your this represent your S vector, right? So how do you represent S vector using I and J? It is 10 I cap plus, sorry, it is a 10 J cap plus, that's all. ऐड कर दूंगा ना दोनों को, दोनों ही है ये. तभी तो ये बताओ, ये जो एरो है इज इट इन अलोंग एक्स और वाई और बोथ? ये जो एरो में, ये एरो किसके लॉन्ग है? ये एरो और ये जेड और बोथ एक्स एंड वाई. सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ एरोज? क्या दुनिया में सारी डायरेक्शन नॉर्थ ही है क्या, या नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है कुछ? तो जो बीच की डायरेक्शन है उनको किनसे रिप्रेजेंट करेंगे? वहां पे आई भी आएगा और सो दिस इज 10i एंड 10j. तो डिस्प्लेसमेंट की तरह देखना है वेक्टर को, 10i 10j plus 10i. so this is the resultant vector. Suppose if there is a vector like this, let me write a vector as I minus j. Can you visualize this vector? What is I? Think in terms of displacement. Or let me write it as 2i minus 3j. तो पहले पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ? यहां से स्टार्ट करते हैं. लेट मी कॉल दिस एज a. देन कितना डिस्प्लेस हुआ यहां से? कितना? 2 गया ऐसे, एंड देन 3 अपवर्ड और 3 डाउनवर्ड. ये क्या लगा हुआ यहां पे? माइनस साइन का मतलब क्या? माइनस साइन का मतलब क्या? बोलो. नहीं बेटा, माइनस साइन का मतलब क्या? उल्टा, वाई डैश नहीं है, ये वाई कैप लिखा है. तो -3 का मतलब क्या है? इज इट गोइंग नॉर्थ और इज इट गोइंग साउथ? When we multiply a minus sign to a vector, it reverses its direction. So minus j means south, j means north. So you are adding, so this person is going, after going towards east, is it going north or is it going south? South. By how much distance? 3. So he will reach somewhere here. So what is the displacement? What is this vector? Complete this vector. इसको कैसे represent करेंगे ग्राफ में? समझ में आई बात? एपी की लेंथ निकालने के लिए बोला, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. बताओ जरा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस थिंग? क्या होगी लेंथ?
अंडर रूट ऑफ 4 + 6 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 10, सॉरी 4 + 9 हुआ, तो कितना हो गया ये? अंडर रूट ऑफ 13। तो ये 13 वेक्टर है या इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ है? लेंथ है, लेकिन डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन किस में आएगी? आई कैप और जे कैप। हाँ, ये मैग्नीट्यूड है। अभी मैं बता रहा हूँ क्या है कि एग्जैक्टली बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बताओ इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, ये लेंथ बताना जरा कितनी होगी? रूट ऑफ 100 + 100, so this will become root of 200, right? Suppose if I write a vector, a vector is equal to ax I cap plus ay j cap, can you tell me what is the length of magnitude of a? What does this mean? Think in terms of displacement. Do you think these are two vectors or one vector? Confusion है? कैसे गया ये? आगे कितना गया और उसके बाद नीचे ऊपर कितना गया? तो टोटल कितना गया? ये कितना डिस्प्लेस हुआ? यही है ना ए वेक्टर। तो कैसे लिखोगे इसका मैग्नीट्यूड? लगा दो पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ax² प्लस, कुछ समझ में आ रहा है? अब एक नोट, अब ये सब मत लिखो, राइट अ नोट। नोट नंबर 2, in general to represent any direction, we have to use both I and J ब्रैकेट में and also K, I J and also ब्रैकेट में K। यानी अगर कोई वेक्टर, ये बताओ ये एक वेक्टर है कि नहीं? डोंट यू थिंक इट इज अ वेक्टर और नॉट? इज इट अ वेक्टर और नॉट? बट इट इज नाइदर अलोंग y एक्सिस नॉर अलोंग x एक्सिस, इट इज अलोंग बोथ। थोड़ा सा y के अलोंग भी है और थोड़ा सा x के अलोंग भी है। तो जितना इसका कंपोनेंट y के अलोंग है, उस x के अलोंग है, उसे हम क्या बोल देते हैं? ax। और जितना इसका कंपोनेंट किसके अलोंग, क्योंकि ये जो वेक्टर है, ये जो फोर्स है, ये जो वेलोसिटी है, इट हैज सम कंपोनेंट अलोंग x as well as it has some component along y, it has both, so to represent this we need both ax along I cap plus ay along, so this is the representation of vectors in terms of I and j। तो आज से किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वर्ड यूज करेंगे, आई और जे के टर्म्स में आएगी। समझ में आया? जैसे फंडामेंटल एमएलटी होती थी, सारी क्वांटिटीज को किसके टर्म्स में लिखते थे? एमएलटी। वैसे अब सारी डायरेक्शन को किसके टर्म्स में लिखोगे? आई जे एंड ऑल्सो इन जनरल के की बात बाद में करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट आई एंड जे। इट मेक सेंस? बोलो। डायरेक्शन देखिए, वो मैग्नीट्यूड के साइड पे देखिए, आई जे के साइड पे। डायरेक्शन आई जी के साइन पे, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा। मतलब जैसे देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। ये माइनस साइन है ना, ये 2i प्लस 3 ऑफ माइनस जे, 3 टाइम्स ऑफ माइनस जे है डियर। समझे? हाँ, वही सही आया ये कि ये मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्या है? लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव इन वेक्टर इज डायरेक्शन। तो ये बताओ, हाउ डू यू राइट द लेंथ ऑफ दिस? इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? अगर मुझे इसकी लेंथ लिखनी है, मैग्नीट्यूड, ये कैसे लिखेंगे? हाउ डू राइट द मैग्नीट्यूड? It is the using Pythagoras theorem, right? Under root of a square plus b square, and so we represent the magnitude by just a. So this is given as under root of plus
b, sorry, not b, ax square plus ay square. Suppose if there are three x's, then ax square, ay square plus az square. Clear हुआ? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? कंफ्यूजिंग तो नहीं है? अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा डाउट, एक एक डाउट। लिखा आपने? एक नोट और लिखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर्स टू वेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेक्टर लाइक दिस, लेट मी रिप्रेजेंट दिस वेक्टर एज ए वेक्टर। So what do you mean? Suppose if I multiply a vector by half. So what do you mean by half a vector? So you have multiplied half with a vector, right? So if you multiply a scalar like a half, 2, 3, 4, 5, 10, what happens to the vector is what is. So when you multiply by half, what happens? The orientation remains the same, only the length becomes, right? Direction remains same, only the length becomes half. Can you see this? Suppose if I multiply this with minus half, can you visualize what will happen? The magnitude will also become half and the direction will, it will be collinear still. The direction will not rotate. It will be along the same line but opposite. So this and the magnitude is still. Suppose if I multiply by 2, what does this mean? Length will be double, right? So this is 2a with same, all of them will be collinear. Similarly, minus 2 means length will be doubled but opposite direction. तो आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? What happens when you multiply scalar to a vector? क्या करता है ये? मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है और डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या? रिवर्स कर सकता है बस. It cannot rotate the vector. So when you multiply by a scalar, it can change or reverse. It cannot rotate. Write this. The scalars, when multiplied with vectors, will change its length oblique magnitude. Vectors when multiplied by, नहीं क्या लिखा? Will change its length or reverse its direction, or reverse its direction but cannot rotate the vector, but cannot rotate the vector. क्लियर हुआ? तो यहीं से ही एक टर्म निकल के आता है, ये वेक्टर, ये इस एरो को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस ए वाई जे. जब मैं ये लिखता हूं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस, इट मेक सेंस. और जब मैं ये लिखता हूं इसका मतलब क्या है जी? जे कैप है, आई कैप है. ये क्या है? ये क्या है? पहले कैप, ए कैप का मतलब क्या है? अरे यार कहां एरिया के पीछे तुम 1 घंटे से पढ़े हो? फॉरगेट एरिया. व्हाट इज कैप? ए डजंट, ये अल्फाबेट डज नॉट मैटर. वी आर फोकसिंग ऑन कैप. We are focusing on arrow. We are focusing on nothing. If there is nothing, it is a magnitude.
If there is an arrow, it is a complete vector. And if it is a cap, it represents what? A vector with length 1, pointing towards where? Ij or A. So it's a unit vector of Ij or unit vector along A, my dear. समझ में आई बात? This is A cap. So what is a cap? It is a vector which has a length 1. It is pointing, which is along A. So how do you get this? ये लेंथ कैसे मिलेगी जब मैं इस A वेक्टर को कट कर दूं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में? Don't you think all of them will be a unit vector? सबका वैल्यू 1 होगा. तो किस चीज से डिवाइड करूं? कैसे वेक्टर को छोटा करते हैं? डिवाइड स्केलर से छोटा करते हो ना. तो किस चीज से डिवाइड करूं A वेक्टर को कि वो 1 हो जाए? अगर मान लो ये 4 यूनिट का होता तो 4 से डिवाइड कर देते. ये 40 यूनिट का होता तो, अगर ये 400 का होता तो, और ये अगर A का है तो A समझ में आया? What is a unit vector? Vector divided by its magnitude. Now let me make ये सबसे क्रिटिकल है माय डियर, सबसे ज्यादा क्रिटिकल यही है. क्या तुमको ये तीनों डिस्टिंक्शन दिख रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं? इन तीनों में वेक्टर क्या है? कौन कौन से वेक्टर्स हैं? फर्स्ट इज अ वेक्टर और नॉट? बिकॉज इट हैज आई एंड जे, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन आल्सो. Is it second vector? Yes, second is the length of the vector. Second is not vector. Second is the magnitude of the vector. What about third? Third is the only direction. Third में magnitude नहीं है. Second में direction नहीं है. हाँ, but magnitude नहीं है मतलब it does not give us the information of magnitude of A. It only gives the direction of A. It only gives the magnitude of A, and this gives everything of A. This gives everything of A. This gives only magnitude, and this gives only direction. It makes sense? बस यही है, यही चाहिए. अगर तुमको ये समझ में आ गया ना, बता रहा हूँ, वेक्टर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा. पूरा 2D मोशन चुटकियों में हो जाएगा. डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है. डायरेक्शन तो इनफाइनाइट हो सकती है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर से ही करोगे ना. लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड को हटाना था, तो क्या कर दिया हमने? मैग्नीट्यूड 1 कर दिया. तो एनी डायरेक्शन भी वेक्टर ही है. डायरेक्शन इज आल्सो विथ मैग्नीट्यूड 1. तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को 1 कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? डायरेक्शन. मेक सेंस? चलिए, तो अब आपको ये सिंबल्स ए क्या कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए अगर ये एफ वेक्टर लिखा हो, एफ लिखा हो और एफ के ऊपर कैप लिखा हो, इट मेक सेंस और नॉट? It is the complete information, it is the only magnitude, it is the only direction. Example number 1. Suppose f vector is given to you as 3i cap plus 4j cap. Find f cap. क्या फर्क पड़ता है? अब तो आई जे में खेलो ना, यूनिट तो लिखने की जरूरत ही नहीं. तो क्या हो जाएगा? एफ क्या होगा? एफ का फॉर्मूला क्या है? लेंथ. लेंथ कैसे लिखोगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ गया? 5 आ गया. 5 यूनिट्स, राइट? -5 क्यों होगा? मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव. रूट ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव. रिमेंबर, when you write x square equal to 1, then x can be plus minus 1. But when you are writing root of x square, then it has to be mod x. Basic maths.
So f, what is f cap? So is it a unit vector or is it a very long vector? This expression represent a vector, right? The length of this thing is 5. I want an expression which has length 1. How do I get? By dividing it by its length. So f cap is f vector divided by magnitude of f. So what is that? 3i plus 4j divided by 5. So what you get? 3 by 5i plus 4 by 5j. ये क्या कहलाया? समझे आप इसका मतलब? ये भी i और j है ना, लेकिन इस i और j की खासियत क्या है? इसका ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन y, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसी को डायरेक्शन बोल देते हैं। i और j को ही डायरेक्शन बोल देते हैं, बिकॉज अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो डायरेक्शन तुम वेक्टर ही है। डायरेक्शन इज अ वेक्टर ओनली, बट स्पेशलिटी क्या है उसकी? मैग्नीट्यूड उसका 1 है। जरूरत है? अरे आगे पड़ेगा ना, अभी बता दें सारा जरूरत, बट अभी पड़ेगा ना। जैसे अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, यहीं पे लिखो, राइट अनदर फोर्स F2 has double the magnitude and opposite to the direction. Sorry, not double, double mat likho. Has magnitude 25 and opposite to f. कैसे लिखोगे इसको? आपको एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 25, और उसकी डायरेक्शन क्या है? f के अपोजिट है। कैसे लिखोगे? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन सॉफ्टी, तुम्हारी आवाज आ नहीं रही, म्यूट है तुम्हारा। यू कैन चैट, इफ एनी डाउट यू कैन राइट ऑन चैट, राइट? बताइए, तो कैसे करोगे इसको? सो एनी वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इनटू यूनिट, राइट? अगर आपको याद हो, हम n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लिखते थे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। n1 u1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर के अंदर एक चीज और अंदर आ जाएगी, और वो क्या है? डायरेक्शन। तो बताओ जरा, इस वेक्टर का f वेक्टर की, f2 वेक्टर की मैं अगर बात करूं, f2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ f2 वेक्टर? 25। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ f2 वेक्टर? ऑपोजिट मींस माइनस ऑफ व्हाट? i j और माइनस ऑफ f कैप। डायरेक्शन का मतलब समझ में आया? अब ऐसे यूज होती है। नाउ व्हाट इज f कैप फॉर यू? माइनस ऑफ व्हाट इज f कैप? 3 by 5i प्लस, समझ में आई बात? सो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज 25, व्हाट इज डायरेक्शन? द एक्सप्रेशन, दिस is the direction along f. So we need a separate expression for the direction so that we can just multiply magnitude and get that. तो कितना आया अपना f2 वेक्टर? कितना है बताइए? -3 और -15i कैप एंड -20j कैप, ये है आपका f2 वेक्टर। समझे? क्लियर हुआ? Any doubt? Example number 2. Example number 2.
there is a vector A is given as to you as I plus 2j plus minus 2k. अच्छा k आ जाएगा तो घबरा जाओगे या इज इट ओके? क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस और प्लस ऑफ दिस स्क्वायर. स्क्वायर कर दोगे तो माइनस तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है. ठीक है. एंड बी वेक्टर इज गिवन टू यू एज 10 I cap plus 10 J cap. लिखिए जरा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन. हाँ, आई कैप के सामने 0 नहीं 1 मानना है, क्योंकि दिस इज 1 इंटू आई कैप, राइट? कैसे लिखें इसको? सो व्हाट इज योर सी वेक्टर? व्हाट इज योर सी वेक्टर? C vector is magnitude into direction, right? Into direction. What is magnitude of C? What is magnitude of C? A. And what is direction? B or B ka cap. So what is A here? How do you write A? How do you write the magnitude of A? कैसे लिखें जी इसका मैग्नीट्यूड? कैसे लिखें बताओ, कैसे लिखोगे? अंडर रूट ऑफ व्हाट? 1 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर देन प्लस ऑफ minus 2 का स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर ओनली, राइट? सो दिस इज 4 plus 4 5 plus 1 sorry 4 plus 4 8 plus 1 9, so root of 9, so this will be 3. So 3 is the magnitude of A, right? So it will be 3. Now how do you write B cap? B cap is B vector upon magnitude of B or not? It is B vector upon magnitude of B. What is B vector? What is B vector? When we write vector, it means the complete expression. 10I plus 10j. So can we just multiply by B, or we have to divide by the magnitude also? Otherwise, the magnitude of B will also come in the answer. We don't want that. That's why we are going to the only direction. So what is the magnitude of B? Magnitude of B will be equal to, it will be under root of 100 plus 100, 200. So this is 10 root 2. So here we have 10 root 2. So your C vector will be clearly, you can see, is 3, or you can say this 10 gets cancelled out. 3 by root 2 I cap plus 3 by root 2 J cap. Yes, even the J 10. Clear हुआ? ये आ गया सबका?
इजी। तो समझ में आया यूनिट वेक्टर क्यों चाहिए? So that if we need a direction and if we need a vector along that direction, the magnitude of that particular thing does not disturb us, right? Example number 3. Yes. A vector is given to you as I plus 2j and B vector is given to you 2I plus j. Which of the following are true? A vector is equal to B vector. A cap is equal to B cap. A is equal to B. None of these. बताओ। A is equal to B. Why the first statement is wrong? Why? Why? इसका I 1 है और इसका I क्या है 2 है और इसका J 2 है और इसका J 1 है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? What will change here? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। जरा एक बार मैग्नीट्यूड लिखना है का कितना आएगा मैग्नीट्यूड देखो जरा। रूट इसका भी 1 + 4 और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया √5। तो इनका क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन I और J में वैल्यू अलग होने से क्या फर्क पड़ गया? डायरेक्शन। लेट मी विजुअलाइज दिस। दिस इज I + 2j, राइट? Let's visualize it using displacement. A person has displacement I 1 unit and then 2 units of J. So what is A vector? You can clearly see this represent A vector, right? And the magnitude of this thing is √5. It makes sense? What about B vector? B vector कैसा दिखेगा? Displacement कैसे हुआ पहले? 2I, यानी आगे कितना गया ये 2 आगे गया, 2 ज्यादा ही आगे हो गया, ये 2 एंड देन ओनली 1, इसका आधा ऊपर गया 1। तो ये बी वेक्टर है, इसकी भी लेंथ कितनी आ रही है? दिख रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। लेकिन क्या ये ए और बी वेक्टर सेम है? क्या अलग है? ए वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है और बी वेक्टर तो देखो पैरेलल पॉइंट कर रहा है या किसी दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इट्स नॉट इवन पैरेलल और एंटी पैरेलल, सो दैट्स व्हाई ना तो ये इक्वल है और रीजन ही यही है बिकॉज दे डोंट हैव सेम डायरेक्शन, इसलिए ये गलत है। तो कब दो वेक्टर इक्वल होंगे? जब उनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज इक्वल होना चाहिए। वेरी सिंपल, राइट? एंड डायमेंशन ऑफ कोर्स। चलिए, गुड। So in this case, third option is true. Example number 4. Find unit vectors in the direction of sum of vectors A and B. A वेक्टर आपको दे रखा है I - 2j + 2k और B वेक्टर आपको दे रखा है I + j - k।
कैसे करें? What do you mean by sum of vectors? What do you mean by sum of vectors? How do you interpret this? It is a vector, right? It means you have to add these two. How do you add these two? Can you add I with j and j with k, or you have to I with I, j with j, and k with k? Of course, I with I, j with j. It's obvious, common sense. So how many i's are present here? So it will become a plus b will become 2i. How many j's? 3j or minus j? Very good. Right? How many k? minus k. 3k or just plus k? Plus k. So a plus b vector is just normal addition. Don't you think it becomes very simple? Because you are dealing with components. I with I, j with j, and this is the orthogonality principle of vectors. You can separately take I and j and k. You can separately calculate I, j, and k. The orthogonality principle. Right? We'll see it in projectile motion. The I is independent from j and j is independent from k. These are orthogonal, perpendicular, and independent. So what is magnitude? Now you know the meaning of magnitude. So I guess this is the root of 4 plus 1 plus 1. So root of 6. कुछ क्लियरिटी आ रही है? नहीं, बट ये तो मैग्नीट्यूड हुआ. पूछ क्या रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ए कैप या ए प्लस बी का कैप या ए कैप प्लस बी कैप, ये दोनों सेम है, अलग अलग हैं? ये क्या है? फर्स्ट ऐड देन कैप. ये क्या है? कैप कैप. ऐड 2 कैप्स. सो ये नहीं है, ये है. तो ऐड करने के बाद कितना आया? 2i minus j plus k and then divided by the magnitude. Right? Next, example number 5. So PI. Yes, pi. इसको ना 5j की जगह इसको qj कर लो. qj. बताइए. And direction भी same. If a vector is equal to b vector, then क्या लिखोगे आप? इसका मतलब क्या हुआ? a cap equal to
A equal to, and also my dear, ax equal to, ay equal to, az equal to. I hope you understood all the point. अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका सब कुछ इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट्स, एवरीथिंग. सो कौन सा यहाँ पे लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं, लेफ्ट वाला लगाऊं या राइट वाला, कौन सा इजी है? लेफ्ट वाला इजी लग रहा है. अरे एक्स बी एक्स नहीं लग रहा तुमको, सट सट, इसमें तो रूट रूट आ जाएगा. ये तो सीधा है. बताओ क्या है ए एक्स हियर, बताओ व्हाट इज ए एक्स, यहां से बताओ व्हाट इज ए एक्स. इज इट पी आई और जस्ट पी? आई तो अलग है. इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद द आई. पी शुड बी इक्वल टू व्हाट हियर. क्या -2 करो या आई को ढूंढोगे? आई को आई से, तो यहाँ पे बी एक्स क्या है, +3 लिखा हुआ है, विद साइन लेना है. तो P इक्वल टू 3. बताओ ए वाई क्या है, व्हाट इज ए वाई? क्यू. क्यू के आगे भी प्लस लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, बस क्यू. व्हाट अबाउट बी वाई? इज इट 2 और 2j और -2? इट इज -2. व्हाट अबाउट ए जेड? अरे ए जेड यार, -3. ए जेड, ए का लिखोगे ना पहले. ए जेड इज -3, नॉट बी जेड. बी जेड इज नॉट आर, -r विथ साइन लोगे ना यार. यस, दैट विल कैंसिल आउट. कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? थोड़ा सा 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा आज की क्लास में. बाकी जो मैं आज पढ़ाऊंगा अभी अगला कॉन्सेप्ट, वो अगली क्लास में फिर से रिवाइज कराऊंगा, बट वो बहुत डिफिकल्ट है और इम्पोर्टेंट है. कितने बजे? 5:30 है. ओहो हो. चलो फिर एक क्वेश्चन करके खत्म करते हैं. A vector, a unit vector representing moment of force acting on a non-rigid body rotating about rotating axis in the frame of another fixed axis is given by tau. This term is basically Greek word for t. This is tau. Yes, tau is 0.3 I cap plus 0.4 j cap plus yes, 0.6 I cap plus p j cap. Find p.
इट्स अ ट्रैप जिसमें आप तो एक एक्सिस पे होते हैं, एक एक्सिस पे होगा तो दूसरा कुछ होगा, दूसरी भी मूव कर रही है एक्सिस पे मूव करते हैं तो डायरेक्ट भाई, एक एक्सिस में रोटेट कर रही है और एक एक्सिस पे दूसरा पर्सन बैठा है, वो उस रोटेटिंग एक्सिस को ऑब्जर्व कर रहा है। Are you done with thinking? What is magnitude of a unit vector? कि कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो इसको पकड़ो ना, इस पे क्यों ध्यान दे रहे हो? यही तो मैं सिखा रहा हूं तब से। लर्न दिस एंड दिस, कुछ भी नहीं लिखा हो। तो मैं तुमको जब से क्या सिखा रहा हूं आज की क्लास में, आर वी फोकसिंग ऑन ए वेक्टर और फोकसिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन? सो कुछ भी हो, ये बाढ़ में जाए, इट इज अ कैप, इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? अंडर रूट ऑफ 0.6 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा, यहां से पी की वैल्यू 0.8, वो 36 हो जाएगा। 1 में से हटाओगे 0.36 को तो 0.64 हो जाएगा, रूट लोगे तो 0.8। समझ में आया? Are we focusing on physics or right now we are focusing on basic math, the meaning of these terms? Make sense? तो यही लेसन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन लेसन है। You should be able to read the meaning first of the expression and then we'll use in general physics. निकल जाओ तुम जल्दी से, लेट मत हो। क्लियर हुआ? तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। 3 मेजर चीजें आज की क्लास में हमने क्या सीखी? ए कैप, ए वेक्टर, ए कैप और ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं? एक्स आई प्लस ए वाई जे। ए कैप को कैसे, सॉरी, ए को कैसे लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, क्या यहाँ पे अब मैं ए जेड के भी लिख दूं, थोड़ा पूरा ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस ए जेड स्क्वायर। अब आपको ए एक्स ए वाई ए जेड दिखने लग गए कि नहीं? तो आप डोंट यू थिंक ये कल को वेलोसिटी बन जाएगा, कल को यही फोर्स बन जाएगा। एवरी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म और नॉट, इन एनी डायरेक्शन, जस्ट ए एक्स ए वाई एंड जेड विल वेरी। एक्स ए वाई और ए जेड ही तो वेरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसमें ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? जीरो। कोई चीज अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसमें ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बस ये बचेगा। कोई अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसमें एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। इजी, समझ में आई बात? और ए कैप क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसी एक्सप्रेशन को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन बस ये बड़ा है, ये छोटा है। ये कितना छोटा है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1, ताकि ये डायरेक्शन बन जाएगा। ये वेक्टर्स, इट मेक सेंस? अगली क्लास में हम लोग वेक्टर खत्म ही कर देंगे, लगभग 3 घंटे की क्लास, संडे राइट 4। कोई दिक्कत तो नहीं संडे को? अच्छा, सैटरडे को भी तो क्लास है, बहुत बढ़िया। फिर तो हम प्रोजेक्टाइल भी स्टार्ट कर देंगे संडे को। सैटरडे को सुबह मैथ्स वाले सर की होती है एक्चुअली में, 12th में आफ्टरनून। वही तो मैथ्स वाले जो बच्चे आते हैं ना, आपसे आप देख लो, मैथ्स वाले बच्चे बैठे रहते हैं, दे आर इन 12th क्लास, और वो 1 बजे आ जाते हैं क्योंकि सर कुछ उनके डाउट्स लेते हैं, और उसके बाद उनकी क्लास देखो 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलती है। तो मैथ्स इज लाइक दैट, जो वो पूरा दिन 12th वालों को दे रखा है मैथ्स के डिस्कशन के लिए। 9 बजे बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। हम लोग टाइम से इस बार मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा और अर्ली बुला लो 12th वालों को, ताकि वो 7 तक आप फ्री हो जाओ सैटरडे को। हाँ, वो भी रखेंगे। अभी पहले 12th वालों को सिलेबस खत्म कर दे, फिर आपके में। कितने बजे तुम पहुंचती हो? ये तो रोज की दिक्कत है, सैटरडे को क्या दिक्कत है? तो संडे को 4 to 6 रख लें, है ना, या 3 to 6 रख लेंगे। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। मैथ्स वाले सर को मैं बोलता हूँ कि 7 से ज्यादा एक्सटेंड ना करें,
मतलब वो 4 से एक्सटेंड नहीं करेंगे तो 7 से एक्सटेंड नहीं होगा। आई विल डू समथिंग राइट। चलिए ठीक है, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी ऑन वेक्टर्स ओनली। और इस वीक में कोई टेस्ट नहीं रख रहा हूँ बिकॉज वी नीड एक्स्ट्रा क्लास। ओके, और सिर्फ उस असाइनमेंट के और क्वेश्चन। हाँ उस असाइनमेंट को मैं ग्रुप में डाल दूंगा। है ना, अभी तुम्हारा नया फोन ले लिया है? फोन वही नंबर दूसरा? नहीं, नंबर वो मम्मी का है। अच्छा, मम्मी को वो